अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिछली दफ़ा से मौत का तज़किरा और उसकी हकीकत और ज़िंदगी की हकीकत, इसके मुताल्लिक़ हदीस शुरू हुई थी। और ये अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी दरअसल हमारा एक वक्त है जो हमें यहाँ गुजारना है अल्लाह ताला की मशीयत से, और हमारा असल वतन जो हकीकी वतन है, जहाँ हमारी रूह को सही मानों में सुकून मिलेगा, वो दरअसल आखिरत का वतन ही है, अल्लाह ताला के साथ है। और मौत दरअसल रूह के जिस्म से निकल जाने का नाम है। रूह जब तक जिस्म में रहती है तो कुछ न कुछ आफ़ात, कुछ न कुछ मसाइब, गम, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ये इंसान के ऊपर पड़ती रहती हैं और इनसे निपटना पड़ता है और इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह का एक शेर याद आया कि उन्होंने कहा कि ज़ीस्त क्या है, इब्तिदाए दर्द दिल, यानी ज़िंदगी जो है वो दर्द दिल, गम, आलाम, मुसीबतें इनके शुरू हो जाने का नाम है। मौत क्या है, इंतहाए दर्द दिल, कि जब खूब दर्द दिल बढ़ चुके और तकलीफ़ें, परेशानियाँ इंतहा को पहुँच जाएं, तो बस फिर अपना वक्त पूरा हो जाता है। अपना जो भी परेशानियाँ काटनी है वो इंसान पूरी करके फिर सुकून से, आफ़ियत के साथ चला जाता है। तो हज़रत को जब ये शेर हुआ था तो वो बड़े शौक़ से गुनगुनाते फिरते थे। किताब में लिखा हुआ है कि बार बार पढ़ते रहते थे। फिर किसी ने उनको गालिब का ये शेर सुनाया कि वो जो है ना कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, पहला फिर जहन में नहीं आ रहा उसका। तो बहरहाल वो हज़रत ने जब सुना तो बड़े कहने लगे कि बात वही है, लेकिन उस्ताद जो है वो उस्ताद के तरीक़े से ही कहता है। तो हकीकत ये है कि हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी, इसमें हमेशा कभी खुशी आती, कभी गम आते हैं। और ये तो अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें खुशियाँ भी दी हैं। अगर सारी ज़िंदगी भी आफ़ात में गुज़रती, मुसीबतों में गुज़रती, तो अल्लाह ताला को कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ बुरा कर दिया, अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ़ नहीं किया, बल्कि वो पूरा वक्त हमारा गुजारना हम उसके भी काबिल नहीं हैं। और यहाँ रहकर जो परेशानियाँ, जो मुसीबत इंसान उठाए, उन सब पे अल्लाह की तरफ से अजर सवाब होता है और अल्लाह की नज़र में उसके दर्जात बढ़ते चले जाते हैं और बिलाखिर वो अल्लाह ताला से जा मिलता है। आप उर्दू समझते हैं? हाँ। अच्छा, बहरहाल नाउ रिपीट इन इंग्लिश इंशाल्लाह, बिकॉज लास्ट टाइम वी डिड द कंप्लीट मजलिस इन इंग्लिश and some people complained from the other side that we are not able to understand English, so we'll keep it mixed inshallah. Maybe some things will be missed here and there, but inshallah I'll try my best to keep it in both languages. So last time we had discussed that what is the reality of life and what is the reality of death, and we had said that we have been sent into this world to complete our time, and when that time is complete we will be recalled back by Allah subhanahu wa ta'ala. We have to
go back to our real country, our real place where we have come from and where we will find eternal peace inshallah with Allah subhanahu wa ta'ala. So this time has been allotted to us. In this time, as long as a person is living, there is constantly difficult things coming. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Constantly, insan is in trouble, in an effort, constantly working. There might be good times and there is bad times. It is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He also gives us good times in this life. But if Allah never gave us any good times in this world, and all of the times were testing and a trial for us, even that is justified. Nobody could say to Allah subhanahu wa ta'ala that why did you put us into so much trouble. What Allah does is that with these troubles, with these afflictions, Allah subhanahu wa ta'ala keeps on elevating a person in a status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, when a person reaches a certain station, a certain limit which has been decreed, which can neither be preponed nor be postponed, Allah subhanahu wa ta'ala calls them back. And for a believer who lives with this strong, firm belief that I have to go to my Allah subhanahu wa ta'ala, one day I have to be back, and this place is where I am only completing my days, then for a believer, as we read last time, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that it is a gift. Death is a gift, or the way of saying it would be that the real gift for a believer is death. The gift for a believer, the gift that is special for a believer is death. That they pass away from the world of afflictions and problems and trials and tribulations and find their peace with Allah subhanahu wa ta'ala. Now the hardships of death, they are also a reality, but Allah subhanahu wa ta'ala makes them easy for those people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Death itself, the extraction of the soul, is a very painful experience. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us. One thing that I forgot to missed mentioning last time, those people who recite durood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam excessively. Any form of durood, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabiyil ummi, or the durood Ibrahimi which comes in salah. Any sort of durood, any sort of salutations to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala makes their experience of death easy. But still, death is something that caused a lot of pain to our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam as well. But the reality, the example of this pain of death is, we could look at it as if when you have to get something great, when Allah has decided that you have to do something great, then even the hardships of that way become easy for us and become something that we understand that we have to do. मिसाल के तौर पर किसी का ऑपरेशन होना हो, आँख का ऑपरेशन होना है, कहीं भी और पेट का ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना है, तो मालूम है कि उसमें तकलीफ़ होगी और मालूम है कि एक अरसा तक इंसान या तो बिस्तर पे रहेगा या जिस जगह भी ऑपरेशन हो रहा है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक अरसा तकलीफ़ का गुजारना पड़ेगा. लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये मालूम होता है कि इससे सेहत हासिल हो जाएगी, इसलिए न सिर्फ ये कि इंसान के आसपास वाले उसको यही मशवरा देते हैं कि इस ऑपरेशन को करवा लो, ये सर्जरी करवा लो, बल्कि वो ख़ुद भी जाके ये काम ख़ुद अपने आप को पेश करता है इस काम के लिए और बाकायदा पैसे दे के वो काम अपने साथ करवाता है कि मेरी सर्जरी कर दी जाए, मेरे जिस्म को काट दिया जाए, मेरे यहाँ चीरा लगा दिया जाए, मेरी आँख का इलाज कर दिया जाए, मेरी आँख बना ली जाए, जो भी वो सारे काम इंसान पैसे दे के अपने आप को पेश करके करवाता है और करने वाले का एहसानमंद भी होता है, डॉक्टर का एहसानमंद भी होता है कि भाई आपने हमको हमारा ये ऑपरेशन करके हमें इस तरह से इलाज हो गया, हमारी सेहत हो गई. ये फिर इसी तरह एक और मिसाल हज़रत ये लिखी हुई है कि जब लड़की जवान हो जाती है तो फिर मालूम है कि एक इंतहाई गम का मौका है कि जिस घर में पली बड़ी वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो एक अरसा गुजारा, वो उनको छोड़ के जाना, उस घर को छोड़ के जाना, वो आसान काम नहीं होता. सबको मालूम होता है कि आजमाइश का लम्हा है, कुछ नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वालिदैन बरिज़ा और रग़बत उसकी शादी करते हैं और वो ख़ुद भी अंदर से यही चाह रही होती है कि बिलाखिर अगर उसकी शादी ना हो तो परेशान हो जाती है कि मेरी उम्र गुजरती जा रही है और मेरी शादी नहीं हो रही. तो अगरचे बाज़ मराहिल तकलीफ़ दे होते हैं, लेकिन उनसे गुजर कर अल्लाह ताला खुशी इनायत फरमाते हैं, सेहत इनायत फरमाते हैं. So the example of death, a few examples that have been given, one or two we mentioned last time, a few today, that when somebody is sick,
and they need a surgery, and they know that they are going to be cured because of this surgery, they very happily undergo that surgery. The people around them suggest and recommend and push them that go through this procedure, although it is painful, although it is hard, but they go through it, they willingly go through it, they happily present themselves for being for undergoing that surgery. They pay the person who is doing it, and they are thankful to that person who gives them pain and trouble. Similarly, when a girl becomes of age and it is time for her to marry and go into a different house, it is a challenging, it is a difficult experience. She has grown up with a house, with their father, with their mother, with their siblings, an environment that she's accustomed to, and now she has to cross that doorstep and go into a totally different place with a different man. Maybe she has not known that person ever, but she has to go with that person. The parents put their dear girl through this experience, and the girl goes through that experience for what? Because she knows that through this challenge, if I go through this challenge and if I live through this challenge, there is going to be a time of happiness and progress. So therefore, these are a few examples that with a little hardship, Allah subhanahu wa ta'ala gives us a lot of peace. May Allah subhanahu wa ta'ala make our death easy, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it a source of happiness and pleasure. Ameen ya Rabbal Alameen. The other thing is that in Islam, everything is in a balance. हर चीज़ में एक एतदाल है. मौत की रग़बत रखना, इस बात का ख़्याल रखना, ध्यान रखना कि हम इंशाअल्लाह इस दुनिया से, इस दुनिया की ख़राबियों को, गंदगियों को, इस दुनिया की बोझ को, परेशानियों को, आजमाइशों को अपने कंधे पे से उतार फेंकेंगे और अपने अल्लाह से जा मिलेंगे. इस बात का ध्यान होना ये ज़रूरी है और ये होना चाहिए. अगर ये ध्यान इंसान खो बैठे तो इंसान फिर दुनिया में मगन हो जाएगा, अल्लाह ताला को भूल जाएगा और दुनिया का निज़ाम पूरा धर्म भरम हो जाएगा, जुल्म बहुत बढ़ जाएगा और आदिल ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इसी तरह अगर मौत का ध्यान और मौत की परेशानी इतनी ज़्यादा इंसान के ऊपर सवार हो जाए कि इंसान भूल जाए इस दुनिया के मुताल्लिक़ और इस दुनिया में काम करने के, फंक्शन करने के काबिल ना रहे, तो भी इस दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा. जब तक इंसान इस दुनिया में है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ ज़िम्मेदारियाँ जोड़ी हुई हैं और हर इंसान के कंधे पर दूसरों का बोझ डाला हुआ है और वो बोझ इंसान को उठाना ही होता है. तो दर हकीकत बात यह है कि इस्लाम जो लफ्ज़ है उसका मतलब ही ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह की चाहत है, उस पे खुश रहे, उस पे राज़ी रहे. कौन सा हाल अच्छा? जिस हाल में अल्लाह ताला रखे वो हाल अच्छा. जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इंसान ज़िंदगी में खुश रहे. जब अल्लाह ताला की तरफ से ये तय हो जाए कि अब मौत का वक्त है, तो इंसान जाने में खुश रहे. द रियलिटी ऑफ death, that it is going to come and that it is going to overtake us and that we have to go away from here, and all the troubles, all the problems that we have on our shoulders, we will throw those away and we will go to our Allah subhanahu wa ta'ala and live a happy life. All of that is necessary. We have to keep that in mind. But in Islam there is a balance in everything. If somebody constantly thinks about death and thinks about death so much that they are not able to fulfill their responsibilities which have been placed on their shoulders by Allah subhanahu wa ta'ala, then that is going against the balance of Allah subhanahu wa ta'ala. The word Islam means to submit. Some people say Islam means salam, peace. That's a wrong concept. Salam is a different word. Islam means to submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, when Allah subhanahu wa ta'ala has decided that you have to stay in this world, then you have to be happy that this is the command of my Allah subhanahu wa ta'ala, this is where I have to stay, and I have to deal with whatever I have to deal. All of that is coming on me is from Allah subhanahu wa ta'ala. I will deal with it. I will happily deal with it, because this is the command of my Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala has made suicide haram, prohibited. No matter what your situation is, no matter how hard your life is, if you commit suicide, that means that you are
questioning the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has decided life for you and you are saying that I don't want life, I want to die. इसीलिए अल्लाह ताला ने ख़ुदकुशी को हराम फरमाया है. ख़ुदकुशी, अपने आप को कत्ल कर देना, अपनी जान ले लेना, ये अल्लाह ताला ने हराम इसलिए फरमाया है कि ख़ुदकुशी का मतलब ये है कि आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं हैं, आप अल्लाह के फ़ैसले से खुश नहीं हैं. अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िंदगी दी है, आपको वही ज़िंदगी पूरी करके जाना है. उसमें जो भी मसाइब आएँ, जो भी आज़माइशें आएँ, जो भी आलाम आएँ, उनसे गुज़रना है. मौत अपने वक्त पे आएगी. ये हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई किसी दुख और तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना और दुआ न करे, और अगर बिल्कुल ही लाचार हो तो यूँ दुआ करे कि अल्लाह मेरे लिए जब तक ज़िंदगी बेहतर हो उस वक्त तक मुझे ज़िंदा रखिए, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो उस वक्त मुझे मौत दुनिया से उठा लीजिए. Narrated by Sayyidina Anas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whenever one of you, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that none of you should wish and long for dua or make for death or ask for death because of the afflictions and the pain that they have in this world. And if they find no place, if they find no other option, then they should ask Allah subhanahu wa ta'ala in such a way that, oh Allah, as long as life is better for me, give me life, keep me alive, and when the death becomes better for me, then lift me up, take me away from this world. And the meaning here is that when they find no other option, that means that from inside the death, the wish to die and the wish to go away from this world becomes very strong and they are not able to cope with it. Then the max that they can say again is that, Ya Allah, I submit to your decision. I submit to your decision. As long as you think that life, as long as you know that life is better for me, keep me alive. When you know that death is better for me, give me death. That is the max that a person can ask. Otherwise, a person has to always from their heart, and if not from their heart, at least on whatever they have control over, they have to be happy with the command of Allah subhanahu wa ta'ala. The other thing is that as long as a person is living, the people who are thinking of death, they should think that as long as we are living, number one, like I mentioned already, by whose decision are we here? Who has decided that we are here? And then what is the reason behind giving us life? What is the reason behind giving us life? Like I said, Allah subhanahu wa ta'ala has given us time, and Allah subhanahu wa ta'ala wants us to earn in this world. Earn in this world. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that this is a crop that you are putting the seeds in the ground. In the hereafter you will reap whatever you sow here. So therefore Allah has allowed us time. Allah has allowed us time. Whoever has life, they have an opportunity. They have an opportunity to please their Allah while they are here. Once the life is done, once the life is gone, then there is no chance. Then there is no chance. What do we know? What is going to happen to us when we die? Are we going to be among the people who have pleased Allah subhanahu wa ta'ala, or are we going to be among those people who will wish to come back to this world? Because there's people who would say that, Ya Allah, if you let us go back, we will prove to you how good how virtuous we could have been. And if then we do not believe, then we are truly among the unjust ones. So what do we know? What kind of people are we going to be? As long as our breath is going on, we have time. We have an opportunity. This is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we can use for what? For earning money or making big houses. That all comes on the side for living in this world. Whatever our needs, we have to fulfill them. But the real purpose here is that we have time today, that we can please our Allah subhanahu wa ta'ala, do as many good deeds as we can before the opportunity goes away. Allah. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت أما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وأما مسيئا فلعله أن يستعتب. هذا अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई मौत की तमन्ना न करे, अगर वो नेक है
तो उम्मीद है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा नेकियों में के उसके ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता रहेगा, और अगर उसके अमाल ख़राब हैं तो हो सकता है आइंदा ज़िंदगी में वो तौबा वग़ैरह के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी कर ले। Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that none of you wish for death. None of you wish for death. If it's a good person, if they are a good person, then they will keep on increasing in their stack of good deeds. And if they are a bad person, if they are doing bad deeds, then Allah still is giving them opportunity that they have time, they can repent and they become a good person. Please Allah subhanahu wa ta'ala. Now about the trials and tribulations that a person has during this life. Allah subhanahu wa ta'ala himself has said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. From the creation, insan is in a constant trouble. The Hazrat ulama, the Arifin have explained that what are those troubles. Before a human being is born, when they do not have any body, then the first form of a human being that you could say which comes out of the body, it comes out from a very constricted passage in a troubled state. Then when it starts to grow, it is in a very restricted space where it is again in a restricted space that if it keeps on growing, it will outgrow that place. Then it comes into this world through a very painful, very stressful process. That is the reason why many children die in the process of birth. Then there is cold, there is hot weather, there is needs of this world, hunger, thirst, a child dirties itself, it is in pain, there is sickness. All of these things keep on happening. When it starts to become gets some sense, there is the burden of education and being trained. Then the burden of taking care of your family, responsibilities. Then when a person is old, the general health declines and afflictions and testing and trials by way of health. A person is always feeling weak, a person is always feeling sick. We are young people who do not feel it, but ask an old person how they constantly feel. I was sitting with one of my teachers and they were saying that, yaar, now I can feel that I am old. I can feel all the time that I am old. He was about to retire and he was like, I am always tired. I can feel my age all the time. I started thinking about it, that he's just about 60 years of age and he's saying that I am feeling the pain all the time. I am feeling the weakness all the time. So I thought about it, that what is life now at this stage? A constant low state, a constant state of generalized some sort of body pain, some sort of weakness all the time. So Allah, these are different stages of life and every single stage has its purpose behind it. Old people should not think that they are, na'uzu billah, useless now. Old age has a lot of benefits. Dr. Arifin rahmatullahi alayhi, उनको किसी ने ख़त लिखा, किसी बूढ़े साहब ने, हज़रत की ख़ुद भी बहुत उम्र थी, 80 के करीब होंगे, किसी ने लिखा कि हज़रत मेरी ये बीमारी, ये मसला, इस तरह की परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी, और अब मैं जो हूँ ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, बहुत आजिज़ हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब जो है वो बस मेरी मौत आए और मैं इस दुनिया से जाऊँ। तो हज़रत ने लिखा कि आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये बात मेरे मिजाज के सख्त ख़िलाफ़ है। ज़िंदगी का जो लम्हा जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो हमारे लिए नेमत है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से रखा हुआ, अब ये सोचिए कि अगर आप बूढ़े हो गए और इस हाल में पहुंच भी गए तो अल्लाह ताला ने आपके इर्द गिर्द आपका इंतज़ाम करने वाले कितने लोग रखे हुए। ये अल्लाह ताला की नेमत आपको नज़र नहीं आ रही कि अल्लाह ताला ने, जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको अस्पताल लेके जाने वाले लोग मौजूद हैं, जब आपको भूख लगती है आपको खाना देने वाले लोग मौजूद हैं, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाले लोग अल्लाह ने आपके गिर्द जमा कर दिए। आपकी शुरू की ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त था कि जब ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द फिर रहे हो कि आपका ख्याल रखें? फिर आप पर कमज़ोरी है, आपको बीमारी है, तो जो काम आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवजा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, बल्कि जो सवाब के काम आप सेहत के दिनों में करते थे उनका सवाब मुसलसल जारी है। ये हदीस भी हम आज पढ़ेंगे कि अगर कोई बीमार हो जाता है और कुछ ना कर पाए तो अल्लाह ताला इतने रहीम, इतने करीम हैं, इतने लायक हम्द हैं कि अल्लाह ताला जो सेहत के दिनों में काम चल रहा था वैसे ही सवाब देते रहते हैं। तो अभी बताइए कि बिस्तर पर लेटे लेटे वो सवाब मिल रहा है,
कभी कभी किसी जवान के साथ ऐसा हुआ? फिर बहुत से बूढ़े ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बातों में ऐसा इल्म हिकमत भर देते हैं, वो उम्र का तजर्बा ऐसा उनकी अल्लाह ताला डाल देते हैं कि वो उनकी बातें सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, परेशान, यानी दूर दूर से आते हैं उनके मशवरे लेने के लिए। उनकी इज़्ज़त, उनके रिस्क में अल्लाह ताला जनरली बुढ़ापे के बाद इजाफा फरमा देते हैं। तो ये सब नेमतें भी तो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही हैं ना। और फिर ये कि जितने मसाइब, जितनी परेशानियाँ आ रही हैं, वो सब की सब आपके दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन रही हैं। अल्लाह की नज़र में आप ऊँचे से ऊँचे होते चले आ रहे हैं, अगरचे कि आप सिर्फ बिस्तर पे पड़े हुए हैं और ज़रा सी चीज़ के लिए भी माजूर हुए हैं। और फिर बिलाखिर मौत के मसाइब के बारे में भी हमने ये सुना है कि अल्लाह ताला आखिरी वक्त में जो तकालीफ़ देते हैं, जो मौत की तकलीफ़ आती है, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला बहुत इंसान के दर्जात एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिसको तकलीफ़ दे मौत आए उसको ये नहीं समझना चाहिए कि नऊज़ु बिल्लाह वो अल्लाह ताला के नज़दीक मरदूद ही है बस, यानी अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल वो उसका कोई वो नहीं। बाज़ लोगों को तकलीफ़ मौत के वक्त देकर उनके आखिरी वक्त में दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसान मौत नसीब फरमाए और हमारे दराजात बग़ैर मसाइब, बग़ैर परेशानियों के बढ़ा दे अपनी नज़र में इंशाअल्लाह। तो देयरफॉर आई वाज सेइंग that somebody wrote to my grand Sheikh Dr. Abdul Aziz Arfi rahmatullahi alayhi. They were an old person and they wrote that Hazrat, I am going through this trouble, this sickness. I cannot get off my bed. When I have to go to the bathroom, I am dependent on others. To eat, I am dependent on others. You know, all the body functions, all the things that I used to be able to do, I am not able to do. And I am just waiting for my death to come and be done and go from this world. So Hazrat wrote back that you know that this is something that I really dislike. This is something against my attitude. My way and my perspective. Think about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. When you are in this old age, Allah has a lot. एक बात रह गई बताऊँगा इंशाल्लाह अभी, अल्लाह ने चाहा, ख़ास बात थी वो, बल्कि उर्दू में पहले बता देता हूँ कि बुढ़ापा असल में आपको तैयार कर रहा है मौत के लिए। बुढ़ापा असल में आपको तैयार कर रहा है मौत के लिए। अल्लाह ताला आपको जल्दी जो आपकी ज़िंदगी में काम रह गए थे ताआत के लिहाज से, सवाब के लिहाज से, वो सारे आपको इनायत करके अपनी मुलाकात के लिए तैयार कर रहा है। तो अब ये नेमत का मकाम है, ये शुक्र का मकाम है या परेशान होने का मकाम है? अल्लाह ताला सबका बुढ़ापा भी आसान फरमाए। बहरहाल सो हज़रत रोड बैक दैट yes you are on your bed, yes you are dependent on others, yes you have general weakness, yes you have different diseases that are troubling you, but think about, have you thought about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in this stage of life? There's people around you to take care of your needs. If you need to go to the hospital, there's people to take you to hospital. Your children have become grown-ups. They are strong enough to help you all your life. You helped them. You took care of their needs. Now people are around you to take care of your needs. And the good deeds that you are thinking that I'm not able to do, have you thought about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has said, the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala has said, and we'll read this hadith today inshallah if possible, that in the time of health, whatever you were doing, Allah keeps that reward going, even if you are not able to do them in your days of sickness. So, lying on your bed, being in a state of sickness, you're not moving, and still reward is being written for you. And the special thing is that this stage of life, this stage of brokenness, being shattered from inside, is preparing you for your meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. All the arrogance, all the feelings of being great, of being powerful, of being in control have been taken away from you. Now you are being prepared to meet your Allah subhanahu wa ta'ala, because you cannot meet Allah subhanahu wa ta'ala with kibr and arrogance and feelings of being in control. So Allah is taking those things away from you. Allah is preparing you for His meeting. What a beautiful thing that is. So every stage of life is full of troubles, is full of problems, challenges, different kinds. And then Allah has kept a reason behind everything, and then the death, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. The hardships of the day of judgment, the hardships of the death, the hardships of the grave, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. But those things are there. So the system of Allah subhanahu wa ta'ala is such that Allah has created human being in a constant effort, in a constant trouble. Those people where Allah subhanahu wa ta'ala wants to see them somewhere, Allah wants to see them at a certain status, certain level, and they are not able to get there by their own good deeds.
It's just not within them that they will do good deeds and earn or reach that status. Allah subhanahu wa ta'ala puts some troubles on them, some challenges in their life, and also the one who gives those challenges also gives you the patience and the sabr to go through them. So Allah is the one who's putting you in trouble, and before He puts you in trouble, Allah also gives you the patience and the strength to withstand those challenges, and then you go through that challenge, and Allah subhanahu wa ta'ala gives you the status that Allah subhanahu wa ta'ala has planned for you, that Allah has in store for you. Allah. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द मोमिन को जो भी दुख और जो भी परेशानी और जो भी बीमारी और जो भी परेशानी और जो भी रंज और गम और जो भी अजियत पहुँचती है, यहाँ तक कि कांटा भी अगर उसके लगता है, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों के ज़रिए से उसके गुनाहों की सफाई फरमाते हैं. It is narrated by Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a believer, whatever pain, whatever affliction, whatever disease, whatever hardship, whatever problem, whatever sorrow, whatever difficulty they have, even such minute as a thorn is sticking them, with all these things Allah subhanahu wa ta'ala cleanses them of their sins. عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मर्द मोमिन को जो भी तकलीफ़ पहुँची है मर्ज़ से या उसके अलावा, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देते हैं जिस तरह ख़िज़ा रसीदा दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है. Narrated by Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that no believing person is given any trouble through disease or other affliction apart from disease. Nobody is given that except that Allah subhanahu wa ta'ala through this affliction sheds off their sins like trees shed off their leaves in the fall season. عن محمد ابن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. محمد ابن खालिद अस्सुलमी अपने वालिद और वो अपने दादा से रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मोमिन बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बुलंद मकाम, ऐसा ऊंचा मकाम तय हो जाता है जिसको वो अपने अमल से पा नहीं सकता, तो अल्लाह ताला उसको किसी जिस्मानी या माली तकलीफ़ में या औलाद की तरफ से किसी सदमे और परेशानी में मुब्तला फरमा देते हैं, फिर उसको सब्र की तौफ़ीक दे देते हैं, यहाँ तक कि इस पर सब्र करने की वजह से वो ऐसे बुलंद मकाम पर पहुँचा दिया जाता है जो उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से तय किया गया था. It is narrated by Muhammad ibn Khalid al-Sulami. He quotes from his father, who quotes from his grandfather, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that for a believing slave, Allah subhanahu wa ta'ala decides a high status that they cannot achieve through their own action. So Allah subhanahu wa ta'ala puts them through some sort of affliction, either in their body, which means diseases, or some trouble by way of their wealth, or from their children. And then Allah also gives them sabr over this, patience over this, strength to withstand it. And then Allah subhanahu wa ta'ala takes that person because of their sabr to that place which Allah had decided for them, that station where Allah had decided for them. अब यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ये हदीस तो पढ़ ली हमने, एक हदीस और पढ़ लेते फिर बात अर्ज़ करता हूँ. अन जाबिरिन
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब उन बंदों को जो दुनिया में मुसीबत में मुब्तला रहे, इन मुसीबतों के एवज़ अजर व सवाब दिया जाएगा, तो वो लोग जो दुनिया में हमेशा आराम व चैन से रहे हसरत करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से काटी गई होती. Jabir radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that on the day of judgment, when those people who stayed in troubles, in problems, they will be rewarded for the troubles that they faced in this world. So then, looking at this, the people who always stayed in comfort and luxury in this world, they would desire that our bodies or our skin was cut with scissors that in the world, that we had gone a lot of pain so that we could have got this reward. How great a reward these people are getting. So ये हदीसें तो पढ़ ली हमने. अब इससे ये समझना चाहिए कि उसूल ये है कि जिस हाल में अल्लाह ताला रखे वो हाल अच्छा. In whatever state, the principle is that whatever state Allah keeps us, that is the best state for us. But we are slaves and we are weaklings, we are weak beings. Therefore it is necessary that we keep on asking Allah subhanahu wa ta'ala for afiyat. We keep on asking Allah subhanahu wa ta'ala for peace and a trouble-free life. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has recommended it, has taught us to ask Allah subhanahu wa ta'ala for it. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, we ask for your forgiveness and for afiyat, for freedom from these troubles, for a free, comfortable, easy life, secure life. Some people, they going through these hadiths and learning these great stations and great things, assume a way of kibr with Allah subhanahu wa ta'ala. They start doing some sort of arrogance with Allah subhanahu wa ta'ala. It's a very fine thing, but somebody who's going through this, they are thinking that we are doing very good, we are being a very great person. Some sickness comes, they are in trouble, but instead of asking Allah subhanahu wa ta'ala to take this sickness away, they are saying, Ya Allah, we are happy with what you are putting us in. Remember, when Allah wants to make you cry, cry. When Allah wants to, the things that Allah is putting you through, Allah wants you to ask Allah to come out of those troubles, to ask Allah to get freedom from those troubles. From your heart, whatever comes, you will never question Allah subhanahu wa ta'ala, why did you put me in this? But you have to ask Allah for freedom and peace and ease in your life. Don't be ready that, Ya Allah, whatever comes, I'll be ready for it. There was a person who came to Hakim al-Ummat Maulana Sharif Sahib Thani rahmatullahi alayhi and said that Hazrat ek शेर कहा है, मैंने एक शेर कहा है बड़ा खुश कि अल्लाह बड़ा खूबसूरत शेर हो गया, हज़रत को भी सुनाता हूँ जाके. तो हज़रत को he went and said कि गर बख्श दे तो ज़हे क़िस्मत, गर बख्श दे तो ज़हे क़िस्मत, वरना जो मिजाज यार में आए. If you forgive me, that's my great fortune, but if not, I am happy with what you put me in. Even if you do not forgive me, I am happy with what you put me in. Hazrat said, you have no idea what you are saying. You are supposed to ask for forgiveness. अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी है. हज़रत ने कहा, मैं खुद शायर नहीं थे, शेर नहीं कहते थे, लेकिन शायरों की इस्लाह फरमा दिया करते थे. तो हज़रत ने कहा कि इसको इस तरह करो, गर बख्श दे तो ज़हे क़िस्मत, वरना करूँ ज़ारी. कि आप अगर बख्श दे तो मेरी बड़ी खूबी किस्मत है, बड़ी अच्छी किस्मत है, अगर ना बख्शे तो मैं रोऊंगा, पीटूंगा, चिल्लाऊंगा कि बंदे की ये खारी क्यों मिजाज यार में आए, कि हम आपके बंदे हैं, हमारी ये खारी क्यों आपके मिजाज में आ रही है, हम रो पीट के आपके मिजाज को तब्दील करेंगे. दैट यू पुट अस इनटू, you forgive us, that is our great fortune. But the correct way of saying it is that if you forgive us, if you give us salvation, that is our great fortune. But if you do not, I will cry before you, I will ask you for forgiveness, that why are you are my Allah, I am your slave, why are you putting me in this? Why are you agreeing? Why is it in your mind to put me through this? So therefore, whatever affliction you have, what Allah wants from people is that they ask Allah subhanahu wa ta'ala, that they cry before Allah subhanahu wa ta'ala. Allah makes the personalities tender. Because of sickness, because of hardships, our arrogance is broken. What the feelings
the things in our mind that are going, that we are going to do so many things and we are so much in control and we are such great people, all of that is shattered, and then we cry before Allah subhanahu wa ta'ala. The reason why we are put in these troubles, don't think that Allah is elevating my status. Ask Allah, just like I just said, that Ya Allah, give us high status without putting us through the mujahada, without putting us through the troubles, because the one that you put in troubles, Ya Allah, we are weak beings. We cannot live through those things. We do not have that strength. So ask Allah subhanahu wa ta'ala always for ease. Do not go looking for trouble. And if you are in trouble, it is a very hated kalima. It is a very hated, despised thing to say that, Ya Allah, if you have put me in sickness, I am very happy. I am very happy. You are na'uzubillah showing to Allah subhanahu wa ta'ala that throw at me whatever you want. Then such people, they live through a very, very, very challenging time. Then the thing is that Allah is all powerful. You cannot beat Allah subhanahu wa ta'ala. If you say to Allah subhanahu wa ta'ala that I am ready, throw at me whatever you want, then what is going to happen? Allah is going to throw at you what you cannot sustain, what you cannot live through, and then you are going to lose your iman. Then you are going to, na'uzubillah, start beginning to question Allah subhanahu wa ta'ala. We were having this discussion 2 or 3 days back at our house, and I was thinking that we think about these high things, that Allah puts us in this, Allah makes us go through this and this and this. The first advice that my shaykh, when somebody connects with him, gives him is, stay and be a normal person. Be a normal person. Do not, Hazrat Hakim al-Ummat Ma'ashar Shah Thanvi rahmatullahi alayhi used to say, जिसको कुतुब बनना हो कहीं और चला जाए, जिसको इंसान बनना हो मेरे पास आए. मुराद ये है कि don't think about those high things. Whatever Allah has to give you, Allah will give you. If Allah puts you into a challenge, if Allah puts you into a trouble, ask Allah for ease. Ask Allah for ease. Cry before Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Mufti Taqi Usmani Sahib rahmatullahi alayhi मुद्दतिल्लुह फरमाया करते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हें रुलाए तो रो, अगर अल्लाह तुम्हें दर्द से चिखवाए तो चीखो. रो अल्लाह के सामने कि या अल्लाह हम किस मुसीबत में फंस गए, ये कहो अल्लाह से, और अल्लाह से आफ़ियत मांगो. इस तरह ना खुश होकर बड़े सीना चौड़ा करके कहो कि या अल्लाह आपने जिस हाल में रखा हम बड़े खुश हैं, अल्लाह और डालेंगे, फिर होगा क्या कि तुम ही टूट जाओगे. अल्लाह को तो आजिज़ कर नहीं सकते. फिर क्या होगा कि तुम नऊज़ुबिल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम एकदम से फ्लिप कर जाओगे. तुम अल्लाह को क्वेश्चन करने लगोगे, नऊज़ुबिल्लाह कि मेरी ज़िंदगी में सब डालना था, मुझे ही सबसे गुजारना था. फिर क्या हुआ? ईमान बचा? उसके बाद नहीं बचा ईमान. तो क्या हुआ? बड़े तुर्रम खान, बड़े तीसमार खान बन रहे थे, और फिर क्या हुआ? मुसलमान भी नहीं रहे. आम दर्जे का नॉर्मल इंसान मुसलमान रहे, अल्लाह से आफ़ियत मांगता रहे, अमर मांगता रहे, और उस तरह हल्के हल्के चलता रहे, अपनी ज़िंदगी पूरी करके आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला के यहाँ चला जाए. सो वट एवर अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, दे शुड कीप ऑन आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर आफ़ियत. इफ़ नॉट, इफ़ अल्लाह कीप्स ऑन throwing things at you, then what is going to happen? You are going to flip, and then you are going to start questioning. So in the beginning you are becoming a very courageous person. You are saying that I can throw it at me, whatever it is coming, I can take it on. Na'uzubillah, then what will happen? You will flip and you will start to question the command of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from among those people. May Allah subhanahu wa ta'ala ask Allah subhanahu wa ta'ala for luxury and comfort. There's a few du'as that are coming to my mind of my Hazrat. One is, Ya Allah, हमें अपनी नेमतों में गोताज़न रखिए. या अल्लाह कीप अस सबमर्ज्ड इन योर मर्सीज, इन योर ब्लेसिंग्स. या अल्लाह कीप अस सबमर्ज्ड इन दोज ऑल साइड्स, सराउंडेड इन योर लग्जरीज, इन योर कंफर्ट्स. ऑलवेज आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. या अल्लाह, in whatever shape you keep us in this, keep us in a very good shape, keep us in a great shape in this world, keep us every luxury give us every luxury, every comfort of this world, and keep us in an even better shape in the hereafter. Keep us दुनिया में बहुत अच्छा रखिए, आखिरत में उससे भी अच्छा रखिए, कब्र में उससे भी अच्छा रखिए. ये अहले ईमान का हाल है. अब वो जो अल्लाह ताला अगर किसी को बड़े मकामात देना चाहें, सब्र, तवक्कुल, ज़ुहद, दुनिया से हटना, दुनिया को लात मारना, अल्लाह ताला जिसको वो बात इनायत फरमा दें, वो अल्लाह ताला ख़ुद इनायत फरमा देते हैं. वो फिर इंसान के अंदर से वो चीज़ पैदा होती है, वो करता है. आम लोगों के लिए बस यही है कि अल्लाह से आफ़ियत मांगते रहें, अल्लाह से खुशी मांगते रहें, अल्लाह से कहें अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, कोई आजमाइश ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई मुजाहदा ना आए, हम आफ़ियत से चलते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह हंसते खेलते ये ज़िंदगी गुजारें और आपसे मिलने पहुँच जाएँ खुशी खुशी इंशाअल्लाह. मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव अस दैट. आमीन या रब्बल आलमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम.
Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ya Allah, please, Ya Allah, accept our sitting here, coming here, gathering here, accept this gathering, and Ya Allah, whatever we could ask, Ya Allah, grant us that. Whatever we did not ask, please grant us that. By virtue of the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by virtue of reading them and listening to them, Ya Allah, make this an asset for us in this world and the hereafter. Keep us in a very good shape in this world, Ya Allah, free of all troubles and afflictions. And Ya Allah, keep us in an even better shape. Ya Allah, make the time of death the best time of our life. Ya Allah, make our grave, Ya Allah, way better than our lives and all the luxuries and comforts that we have seen in this world. Ya Allah, give us more in the grave. And Ya Allah, even more in the hereafter. And even more on the day of judgment. And Ya Allah, more happiness. Ya Allah, more comfort, more luxury on the day of judgment than we have ever seen and experienced. And Ya Allah, keep us in Jannah with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, keep us in Jannah with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Make us enter Jannah with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gather us under the shade of your throne with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, we are weak beings. Ya Allah, we cannot, Ya Allah, sustain. We do not have the strength to go through any of the challenges. Ya Allah, Ya Allah, we ask you to protect from all challenges. Ameen Ya Rabbil Alameen. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, whatever you want to give us, Ya Allah, you are not dependent on our skill, Ya Allah, and you are not dependent on putting us through challenges, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, by virtue of your mercy, by virtue of your karam, Ya Allah, Ya Allah, grant us all the good things. Ameen Ya Rabbil Alameen. Protect us from all the evils. Ameen Ya Rabbil Alameen. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma ista'adha minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. My dear student and murid, Janab Nizam and his wife, she's also my murid. Her father has passed away last week in India. May Allah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah forgive his sins, may Allah elevate him in his eyes, may Allah make everything easy for him, give him a lot of honor and respect in the hereafter, and take away all the troubles and hardships, and may Allah give sabrun jameel to the bereaved, the people who he has left behind. May Allah take care of all their needs. May Allah ease the sorrow and the pain on them. Ameen Ya Rabbal Alameen. Rabbana يسر لنا في الأمور كلها وجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم خير لنا واختر لنا في الأمور كلها وجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.